Consider a n plus 1 is equals to 1 upon 1 plus 1 upon a n की वैल्यू 1 2 till 2009 हमें गिवन है, राइट, एंड सो ये रिपीट हो गया था, सो a1 is equals to 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 a2, ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले a1 की जो वैल्यू है दैट इज 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2, सो लेट्स फाइंड आउट। सो a2 के लिए यहाँ पुट करेंगे 1, so this becomes 1 upon a1 which is 1 and 1 plus 1 2 1 by 2, so a2 की वैल्यू आ रही है 1 by 2, a3 की वैल्यू that will be again you have जब आप a3 find out करेंगे तो 2 पुट करेंगे, so this will be 1 by 2 and 2 plus 1 will be 3, so 1 by 3 and so on। इसी तरीके से अगर हम आगे जाते हैं और 2009 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है 1 upon 2009, राइट। अब a1 इंटू a2 अगर करते हैं तो ये बनता है 1 by 2, राइट, प्लस a2 इंटू a3 दैट विल बी 1 upon 2 into 3, a3 into a4 will be 1 upon 3 into 4 plus 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 1 upon ये हो जाएगा आपका 2008 into 2009, right? Let's solve it. So this can be written as 1 minus 1 by 2. It's a popular pattern. This will be 1 by 2 minus 1 by 3. You can check the same expression you are getting, right? This way you can go till 1 upon 2008 minus 1 upon 2009, right? Now simply cancel all the terms. So this will be 1 minus 1 upon 2009. On solving this, you are getting 2008 upon 2009. So correct answer is C option.